social stigma है. Okay, you have to look at physical, mental, and social stigma in this. So there is a Gaurav Jain versus Union of India case. उसमें a very important concept over here was that suppose there is a boy or a child who is born in a so-called stigmatic condition. For example, एक prostitute का बेटा पैदा हुआ है. Now this country will look at, the society will look at that child with a very bad stigma. उस केस में भी हम उसको exploitation and against moral abandonment से बचा के रखेंगे. So the state will ensure that he does not face that stigma also. Are you understanding? It is a far bigger article. So 39E and F are very crucial components, and 39F is also being dealt by under, if you notice this part, Article 24. That is fundamental right. Okay, so अगर fundamental right होगा, उसमें exploitation वाला fund है, so you will understand this, that you protect children from exploitation. So this is about this, and then comes 39A. 39A comes with 42nd Constitutional Amendment Act 1976. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में ये article 39A डाला. उसमें बोला स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम. ये पहली बार आ गया लीगल सिस्टम. देखो आर्टिकल 20 में ऑलरेडी फ्री लीगल एड था, फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन था, बट दैट वाज फॉर क्रिमिनल लॉ. दिस इज फॉर एवरीथिंग. यहाँ पे वर्ड फिर से क्या आ गया? जस्टिस. मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा डीपीएसपी कम्स फ्रॉम द वर्ड जस्टिस. अगर ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो तुमको सब कुछ जस्टिस जस्टिस ही दिखाई देगा. ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी. Okay, and shall in particular provide for legal aid by suitable